Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. In today's session, I am going to discuss how to increase your vocabulary. आप अपनी vocabulary में कैसे इजाफा कर सकते हैं? This is a very common question that student asks that how can we build up our vocabulary? हम अपनी vocabulary में कैसे इजाफा करें? स्पेशली जो हमारे ईटा एनटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो vocabulary का बड़ा इशू है. सर कोई रूल नहीं है, कोई इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम विकेबलरी को कैसे इंक्रीज़ करें. तो मैं ऑलरेडी विकेबलरी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूँ. 6 या 7 वीडियोस हो चुकी हैं. और जो मैं ईटा और एनटीएस की सीरीज़ है एक दफ़ा मैं ग्रामर बेस्ड और विकेबलरी बेस्ड बोथ सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज सेक्शंस आर गोइंग पैरेलल. ईटा एनटीएस की सीरीज़ के नाम से जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैं एक दिन ग्रामर बेस्ड और एक दिन विकेबलरी बेस्ड. Vocabulary based में मैंने synonyms, antonyms, confusing words and very close to जो इस तरह के words हैं जिनके meaning same है, confusing words हैं, तो I have discussed such sort of words. But even then, many students have asked this question that generally, how can we increase our vocabulary? How can we improve our vocabulary? How can we build up our vocabulary? So, and even for spoken English, if you want to speak or write English, you need vocabulary. If your vocabulary is poor, not rich, there is a problem that you may come across while writing or while speaking English. So vocabulary is very important. चाहे आप कुछ लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या आप इस तरह के MCQs बेस्ड ईटा एनटीएस टाइप टेस्ट दे रहे हैं, vocabulary is equally important for each and every sort of things. So today I am going to discuss a technique with the help of which you can build up, you can increase your vocabulary. The name of that technique is 3 R's. तो ये 3 R's टेक्निक क्या है, आप कैसे इसको यूटिलाइज करके अपनी vocabulary को अब ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं होगा कि 2 दिन 3 दिन आप vocabulary में बड़ा आपका ज़ख़ीरा बहुत रिच हो जाएगा. It's a gradual process. You have to practice. You have to keep on practicing this technique, and inshallah with the best of time you will see that your vocabulary that's increasing with the best of time. So what is 3 R's? The first R is read. You have to read. Now when I say read, what to read and how to read, these are the questions that may rise in your mind. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा हो सकते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें. तो सबसे पहले what to read. You should read the things, the article, the books of your interest, you are interested in. ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती है, you are not having any sort of interest. आप force reading जो है, that's not of any use, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. The thing of your interest, the thing that you are interested in, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसमें आपकी इंटरेस्ट है. For example, you are interested in sports, you can read sports article. If you are interested in current affairs, you can read newspapers. जो articles होते हैं newspapers में, जो literary ऐसी चीज़ें, अब आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आप कॉलम्स पढ़ सकते हैं. मुख्तलिफ लोगों के बड़े ज़बरदस्त लिटरेरी कॉलम्स होते हैं, या पोलिटिकल बेस्ड कॉलम्स होते हैं, स्पोर्ट्स के कॉलम्स होते हैं, या आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं. एनी थिंग दैट इज़ रिटन इन इंग्लिश, सिंपल इज़ दैट. इट्स अप टू योर इंटरेस्ट. आपकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आपकी इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, तो आप ज़ाहिर उसको बर्डन समझेंगे, और जिस चीज़ को बर्डन समझ के किया जाता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. जिस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट होती है, आप उसको शौक़ से पढ़ते हैं, तो दिल से जो शौक़ से जो काम किया जाता है उसका आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो बेहतर होते हैं. यू हैव टू रीड द थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसमें आप इंटरेस्ट है. देन हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे. When you read something, for example, you are reading a newspaper, a column, an article, and you will find many difficult words. Now what you are supposed to do? If you consult the dictionary for each and every word, then automatically the process of reading that will slow down and you will get bored. आप उकता जाएंगे, बोर हो जाएंगे कि बार बार आपको एक लफ्ज़ के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ती है. Then what can you do? आप क्या करेंगे. तो there is a reading technique that guess the meaning of the words with the help of the neighboring words yourself in the context. With the help of the context, तो contextual meaning जिसे हम कहते हैं, you can guess the meaning of the word yourself with the help of the neighboring words. आप किसी लाइन में कोई एक आध वर्ड, 2 वर्ड मुश्किल होंगे, बाकी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको आते हैं. तो दिस इज द टेक्निक एंड यू विल डेवलप अ हैबिट.
आफ्टर लॉट ऑफ रीडिंग, जब आप बार बार रीड करते हैं तो ज़ाहिर से वो एक तरह की लैंग्वेज होती है जो बार बार कॉलम्स में और जो भी जिस चीज़ में भी आपकी इंटरेस्ट है उसको जब आप पढ़ते हैं तो सेम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स द राइटर इज़ यूजिंग, या जिस चीज़ को भी आप मतलब स्पोर्ट्स में ख़ास वर्ड बार बार यूज़ होते हैं, पॉलिटिक्स में जो पोलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं वो ख़ास वर्डिंग होती है उनकी ख़ास। इस तरह आप एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं ख़ास वर्डिंग होती है, तो वील गेट यूज्ड टू, आप यूज्ड टू हो जाएंगे उन वर्ड्स के, और फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा एक आध वर्ड पूरे पैराग्राफ में या एक लाइन में, तो यू विल हैव टू गेस द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड विद द हेल्प ऑफ द नेबरिंग वर्ड। दिस इज़ अ रीडिंग टेक्निक। इफ़ यू कंसल्ट द डिक्शनरी for each and every word that's difficult, then there will be no reading. You will get bored. आप उगता जाएंगे, बोर हो जाएंगे, और it's very time consuming job. So this is a technique that you have to guess the meaning of that particular word with the help of the neighboring words. So this is the second thing, how to read. So when you read, what to read, I have told you, and how to read. This is first hour of 3 hours technique. Now the second one, reading आपने कर ली, you have developed a habit of reading and will get used to the wording, the kind of wording that the writer is using, whether you are reading a newspaper or articles or sports journals, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपकी इंटरेस्ट है तो उसमें ख़ास लैंग्वेज होगी, ख़ास वर्डिंग होगी, आप उसमें यूज्ड हो जाएंगे। Then the next thing is record. When you are reading something, you will come across two kind of words. Totally new words. If you find a word that is totally new for you, you should have a notebook in your hand. Just record that word. Notebook, या आजकल आप there are different, you can say, gadgets. आप मोबाइल में अब रिकॉर्ड कर सकते हैं वर्ड्स, जिस तरह भी आप उस चीज़ को नोट कर सकते हैं, whether it's a notebook या उसमें मोबाइल में नोट पैड होते हैं या रिकॉर्डिंग करके आप नोट कर सकते हैं. So you have to note down a word that is totally new for you, or a word that you have read already but you had forgotten that. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने पहले पढ़े होते हैं लेकिन हमारी वोकैबुलरी में नहीं रहते, जब हम दोबारा देखते हैं फिर लगता है हाँ ये लफ्ज़ मैंने कहीं पढ़ा था. तो these are the word that you read already but you had forgotten. So there are two kind of words that you will come across, a totally new word or a word that you had forgotten. So note down both kind of words. आपके पास आपकी नोटबुक हो, then you have to make a list of 4 different words, different class of words. The major class of words are noun, verb, adverb, adjective. You have to make 4 list in your notebook. अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 कॉलम 4 लिस्ट बना दें, and write nouns in the list of noun, verbs in the list of verbs, adjective in the list of adjectives, and adverbs in the list of adverbs. This will be a sort of practice for your parts of speech. And then you have to record 2 kind of words, as I have already told you, totally new word, and the second thing is a word that you had forgotten. Then the next R is revise. आप रीडिंग कर रहे हैं, न्यू वर्ड्स आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, देन अगर आप नोट करते जाएं महीने बाद दोबारा देखेंगे तो you will have forgotten those words. So once in a week you have to revise your list, the list that you have noted down, the word that you have noted down, you have to revise. एक दफ़ा आपने उन वर्ड्स को देख लेना है, and then to keep those words the part of your vocabulary, you have to make sentences for those words. अपनी उसी कॉपी में आपने उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट उस वर्ड का क्लियर हो जाए. आपने किसी न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल में वो लफ्ज़ पढ़ा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका मतलब क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में. जब आप खुद उस सेंटेंस का उस वर्ड के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ड आपके माइंड में, आपकी वोकैबुलरी में वो पक्का हो जाएगा और आप उस वर्ड का कॉन्सेप्ट आपके साथ अटैच हो जाएगा. यू विल बी एबल टू यूज़ दिस वर्ड इन योर कॉन्टेक्स्ट, इन योर राइटिंग, इन योर टेक्स्ट, द टेक्स्ट दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस. जो आप लिखना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे, तो वो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा होगा. तो वंस इन अ वीक यू हैव टू रिवाइज दैट लिस्ट, दैट वोकैबुलरी, एंड देन ट्राई टू यूज दोज वर्ड इन योर सेंटेंसेस. इस तरह आपकी वोकैबुलरी इनरिच होती जाएगी, वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी, और साथ साथ आपने जितने भी लिस्ट आपकी बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा हफ्ते में एक दफ़ा आपने वो वर्ड देख लेने हैं. तो इस तरह मैक्सिमम वर्ड विल बिकम द पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी.
अगर 100% वर्ड्स आपके जहन में नहीं भी रहेंगे, 2 4 5 7 10 भूल भी जाएंगे शायद, लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद रहेंगे। इस तरह आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी और एटलीस्ट जब भी आपके सामने किसी कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड दोबारा आएगा, आप फ़ौरन उसका मीनिंग गेस कर लेंगे। दिस इज़ अ ग्रेट बेनिफिट। आपकी जो नोटेड डाउन आप नोट करेंगे, उसका ये फ़ायदा ये होगा कि दोबारा वो वर्ड आपके सामने आएगा, आप उसके कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप फ़ौरन उसका मीनिंग गेस कर लेंगे। देन वन मोर सजेशन फॉर यू कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मूवीज़, ज़ाहिर है किसी किस्म की मूवी भी आप इंटरेस्ट है, आप वो मूवीज़ देखें और स्पेशली वो मूवीज़ जिनमें नीचे साथ सब टाइटल इंग्लिश में लिखी हुई आती है। बाद दफ़ा इंडियन उर्दू मूवीज़ में भी साथ नीचे इंग्लिश में उसमें सब टाइटल्स होते हैं, तो वो वर्ड्स ज़ाहिर है आपको साथ उनकी बातें समझ आ रही होती हैं जब उर्दू में, तो सामने इंग्लिश में साथ लिखा हुआ होता है। या इंग्लिश मूवीज़ जिनमें इंग्लिश में आगे इंग्लिश लिखी हुई भी आती है सब टाइटल्स में, तो ये मूवीज़ भी ज़रा जिस तरह की मूवीज़ आप देखते हैं जहाँ आपकी इंटरेस्ट है, ये भी आपकी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा बिल्डअप करते हैं। बहुत सारे लफ्ज़ जब आप सुन भी रहे होते हैं, आपको बात समझ आ रही है, उर्दू अगर मूवी देख रहे हैं तो उसमें इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो उस तरह के वर्ड्स को भी आप साथ फ़ौरन नोट कर लें। या इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, अब आपकी इंटरेस्ट इंग्लिश मूवीज़ है, तो ऐसी मूवीज़ जिनमें आगे लिखा हुआ हो सकता है बोलते हुए आपको उनका एक्सेंट इस तरह है, उनकी प्रोनाउंसिएशन का लेवल ये आपको समझना है, तो अगर आप वो लिखे हुए भी साथ होगा तो आप नए वर्ड्स वहाँ से भी सीख जाएंगे। तो दिस इज़ 3R technique to build up your vocabulary. That's a very good technique. If you practice this technique, if you practice just for 1 month, you will see that you have added many new words in your vocabulary. And vocabulary is very much important for spoken, written English and for different kind of tests. I hope you will practice this technique and you will increase your vocabulary, you will build up your vocabulary. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.